Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, Biotechnology Principles and Processes. So now let us start with a new chapter. Now, biotechnology is a new concept which you are going to study. Let us talk about certain things first of all. Now, biotechnology deals with technique of using live organism or enzymes derived from organism to produce products and processes which are useful for human beings. So in a way, biotechnology is a useful thing for human. Now let us talk about certain things in biotechnology. Let us first of all start with principles of biotechnology. There are actually two core techniques that has enabled the birth of modern biotechnology. Let us discuss them. First is general genetic engineering. Now it is the technique to alter the chemistry of genetic material, that is DNA and RNA. DNA can be taken from any other organism and it can be inserted inside any other organism as such to get the desired phenotypic expression. Now, this is the first core technique. Let us discuss the second core technique. Second core technique is maintenance of sterile ambience, or you can say environment. This is actually chemical engineering. Now, maintaining sterile environment in a medium so that only the desired organism can grow in that particular medium and undesired organism cannot grow. This is required because desired organism, with the help of desired organism, we can derive products such as antibiotics, enzymes, as well as certain important proteins. So that is the two core techniques of biotechnology. Now, this is the diagram you are observing right now. This is actually a diagram of bacteria. This is the part which I have marked. This is the genome of the bacteria. You know, nucleoid is a region which contains the DNA. And you can see these circles present over here. These are actually called as vectors. These are extra chromosomal genetic material. Genetic material which are present outside the nucleoid, or you can say nucleus, are called as extra chromosomal genetic material. Now, in this, we can call it as vectors also. Now, vectors are very important in biotechnology. Actually, to transfer the DNA from one organism to another organism, we cannot directly do it. We do it with the help of vectors. So, isolating vectors from one organism, cleaving it का मतलब होता है काटना उसको, and then inserting the desired piece of DNA inside it, and then we get a recombinant DNA. यानी वेक्टर डीएनए के साथ साथ उसमें क्या इंसर्ट होता है, उसमें इंसर्ट होता है डिजायर्ड डीएनए का. इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ट्रांसफरिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए inside the organism, inside the host, is very important. Now, see this diagram is a general idea of how biotechnology works. This is a kind of bacteria called as Agrobacterium tumefaciens. Now what we are doing is we are transferring this plasmid, or you can say we are isolating this plasmid from here. This plasmid contain a part in it which is called as tDNA. In the tDNA we can cleave it, some part of the tDNA, and we can insert the desired DNA inside it. Then this whole structure is transferred inside the root cells. प्लांट्स के जो रूट सेल्स होते हैं उनको, उनमें ये पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि इस वेक्टर को और प्लस डिजायर्ड डीएनए को हम इंसर्ट करा सकते हैं, एंड सो दैट द प्लांट्स कैन एक्सप्रेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट. उस प्लांट्स में जो हम डिजायर्ड क्वालिटी चाहते हैं वो इंक्यूलेट कर सकते हैं.
So this is the general idea of biotechnology, or you can say recombinant DNA technology, which is a very important part of biotechnology as such. Now, this is a general idea of restriction endonuclease enzyme. There are many kinds of restriction endonuclease enzyme. One of them is ECOR first, which is given over here. You can see. Now the sequence which is recognized by ECOR first is GAATTC. Now it cuts between G and A nucleotide, as you can see over here, from both the sides, from here also and from here also. ये खोलता है वेक्टर डीएनए को. Same EcoRI first will be applied to cut the foreign DNA. जहां से आपको डिजायर्ड डीएनए लेना है वहां से भी इसको EcoRI फर्स्ट अप्लाई किया जाएगा ताकि आप डिजायर्ड डीएनए को कट करा सके, और वहां से कट कराने के बाद वेक्टर डीएनए में वेक्टर के साथ इंसर्ट करा देना होता है. ना इंसर्ट कराने के बाद इस पूरे वेक्टर को, यानी कि वेक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए, इसको भेजना होता है होस्ट के अंदर ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके. नाउ restriction endonuclease enzyme is a kind of enzyme which are present in prokaryotes. They are present as a part of defense mechanism of the prokaryotes. जैसे किसी प्रोकैरियोट में कोई वायरस एंटर कर रहा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस वायरस के जीनोम को कट कर देगा. तो कट करने की वजह से ये वायरस जो है प्रोकैरियोट के, यानी कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं बन पाएगा और इस तरह से वो बच जाएगा. तो दैट इज द रीजन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, including some eukaryotes such as yeast. Now restriction endonuclease enzyme हम derive करते हैं. बहुत सारे restriction endonuclease enzyme मिल चुके हैं. हर restriction endonuclease enzyme का एक टारगेट सीक्वेंस होता है जहां वो कट करता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. नाउ देखिए, ये दोनों जगह, ये GAATTC और इधर भी GAATTC, ये अगर फॉरेन डीएनए का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा फॉरेन डीएनए है और हम सिर्फ ये डिजायर्ड सीक्वेंस लेना चाहते हैं, तो डिजायर्ड सीक्वेंस के दोनों तरफ ही GAATTC होना चाहिए. अब यहाँ ये कैसे कट करेगा? इस फ्रेगमेंट को G और A के बीच में से U और यहाँ से ऐसे, ये पूरा फ्रेगमेंट ये ऐसे कट करेगा और ये हो जाएगा आपका डिजायर्ड सीक्वेंस. यानी डिजायर्ड डीएनए के अलावा थोड़ा सा और सीक्वेंस भी उसमें आ जाता है. ना ये देखिए एक आइडिया, ये वेक्टर डीएनए को यहाँ से कट कराया हम लोगों ने, ये क्लीवेज साइट थी, यहाँ से कट कराया, देख रहे हैं आप, इसमें ये डिजायर्ड सीक्वेंस जोड़ दिया. अब ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इसको आप ट्रांसफर कराओगे होस्ट में. तो देखिए ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है. ये एंजाइम जो है ये EcoRI1 इस सीक्वेंस को कट कर रहा है, फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को भी कट कर रहा है. अब ये आपस में अपने आप जुड़ जाएंगे. ये यहाँ पे स्टिकी एंड्स क्रिएट हुए हैं. ये हो गया आपका, ये दोनों जुड़ गए और क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि वेक्टर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है जो न्यूक्लियोइड का हिस्सा ना हो. क्लोज्ड सर्कुलर भी होते हैं, यानी कि 5 और 3 एंड इसमें नहीं होता जैसे कि लीनियर डीएनए में होता है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. होपफुली इस लेक्चर को आगे हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे बताना पड़े कुछ आगे के पार्ट, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर मैनर. विल सी टू इट. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट. नेम 2 कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो हमने अभी आपको बताया 2 टेक्निक है. पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है
और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल इन्वायरमेंट, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। What are restriction endonuclease enzyme? These are enzymes which are present in the prokaryotes as a defense mechanism of the prokaryotes, so that any other organism, genome of any other organism cannot come enter inside the host cell. What are plasmids? तो ये हमने आपको बताया, इनका फंक्शंस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टू ट्रांसफर द डीएनए from of the foreign DNA into the host cell. Transfer the foreign DNA into the host cell. I hope you like my topic today. Thank you and have a nice day.